define a labor force, ये आप खुद कर लीजिएगा, people who are willing and able to work. Explain two causes of an aging population, ये भी आप खुद कर लीजिएगा, this is simple stuff. Fall in birth rate आप लिख सकते हैं, you know, that's one of the reasons why people, अभी आपकी population जो है वो age होती जाएगी. Fall in death rate लिख सकते हैं, ठीक है, that बहुत कुछ लिख सकते हैं, वैसे तो उसके अंदर बहुत सारे factors लिख सकते हैं aging population के, ठीक है ना. I think I don't need to, you know, go over this part B. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड पार्ट सी कह रहा है. अच्छा, पार्ट सी और डी थोड़ा सा समझ लो कि मजेदार क्वेश्चन है, मतलब इनफैक्ट ये फॉरेन उस पे आया है, करंट अकाउंट डेफिसिट पे आया है, और पार्ट डी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्रो का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पे आया है. अच्छा जी, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. इट सेज, पार्ट सी सेज, एनालाइज हाउ अ fall in the value of a foreign country's foreign exchange rate would reduce a deficit on the current account. So basically what they're saying is कि करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, ठीक है, या वो डीवैल्यू भी हो सकती है, दोनों. हाउ विल दिस बेसिकली रिड्यूस अ करंट अकाउंट डेफिसिट, वो आपसे ये पूछ रहा है. करेंसी डीवैल्यू या डिप्रिशिएट होती है तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे रिड्यूस होगा, ठीक है. तो देख लेते हैं. सबसे पहले तो आप बताएंगे कि यार what is a depreciation? It's basically your fall in the value of the currency, and you know, then you also talk about the fact that a deficit on the current account occurs when your outflows are more than your inflows in the country, and primarily your deficit occurs for the balance of trade deficit, because that is a major component of a current account. Apart, all the rest of there are other things that determine whether the current account will be deficit or surplus, but the major transactions are because of the imports and exports, basically what we're trying to say. इसमें आप लिखेंगे क्या, इसमें आप अच्छा, अब इसके अंदर ना बेसिकली आपको चेन ऑफ एनालिसिस फॉर्म करनी होगी कि ऐसा कैसे होगा, क्यों होगा बेसिकली. तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि देखें, पहले तो एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन भी देना है इसमें, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या होता है आपको बताना पड़ेगा. एक्सचेंज रेट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ वन करेंसी और द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, ठीक है. तो आप बताओगे कि यार अगर करेंसी आपकी डेप्रिशिएट होती है, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन का फर्क सिर्फ ये अफेक्ट एक ही है, फर्क ये है कि डेप्रिसिएशन होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, और डीवैल्यूएशन जो होता है वो फिक्स एक्सचेंज रेट में या मैनेज फ्लोटिंग में होता है, लेकिन गवर्नमेंट करती है, स्टेट करती है उसको किसी रीजन की वजह से, ठीक है. तो इसका होगा ये कि जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, लेट्स से अ डॉलर इज वर्थ 100 रुपीज मे बी, सो नाउ इफ द डॉलर इज वर्थ लेट्स से, बल्कि रुपीज छोड़ देते हैं, इफ द डॉलर इज वर्थ लेट्स से 4 pounds, now the dollar is worth let's say 2 pounds, so dollar जो है वो depreciate हो चुका है. तो इससे क्या होता है, अगर हम डॉलर्स की बात करें, let's suppose we are US, so basically what will happen is that the price of exports will go down while the price of imports will go up. मैंने कहा था ये याद कर लेना, depreciation का यही होता है, price of exports will go down and the quantity of exports will go up while the quantity of imports will go down. According to this rule, what will happen is that your export revenues will go up and your import expenditures would go down. तो ये आपको बताना होगा basically, and that is why your deficit would reduce, because if export revenues would go up and import expenditures would go down, your balance of trade will improve. It will have a positive impact on your balance of trade, and this will improve, and this will actually reduce the deficit on the current account. Deficit on the current account जो है वो आपका reduce होगा इस वजह से, ठीक है. But obviously this would obviously depend upon the elasticity. मैंने आपको याद है, आपको बताया था, it would depend upon the PD for exports and PD for imports. This should be greater than 1. The PD for exports and imports basically should be greater than 1. They should be elastic, otherwise it won't work, ठीक है. एनालाइज का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो इनइलास्टिक होगा तो क्या होगा, और वो सब बातें नहीं बतानी, कोई डिस्कस क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है. तो आप क्या बताओगे, एनालाइज क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप बताओगे इस तरीके से कि ये बताना जरूरी होगा कि प्राइस गिरने की वजह से क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी, ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, जिससे एक्सपोर्ट रेवेन्यूज बढ़ेंगे. सर एक्सपोर्ट रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो इनफ्लोज बढ़ेंगे, ठीक है, और एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर्स गिरेंगे तो आपके आउटफ्लोज गिरेंगे. इसमें आप और ये लिखोगे अगेन, तो ये इंपॉर्टेंट है that if you mention that if the price of exports goes down, the quantity of exports go up. Why? Because the demand for exports will go up. If the price of imports go up, the quantity of imports will go down. Why? Because the demand for imports will go down. ठीक है ना.
दैट्स इट। और फिर आपको एक्सप्लेन कर देना ये बात, क्योंकि एनालिसिस है तो आप एक्सप्लेन कर देना कि फॉर एग्जांपल नाउ अकॉर्डिंग, एक सिनेरियो बना देना इस तरह इमेजिनरी सा, और आप कह देना कि आप यही कह देना कि देखिए नाउ यूके हैज टू ओनली पे £2 to buy $1. So obviously it means why $1? So it means that the price of exports are going down. Price of US exports are going down. While on the other hand, USA can only buy £2 worth of imports in a dollar, right? In a dollar. So if USA has to buy £4 worth of imports, then it has to pay $2 basically. अगर उसको £4 की इंपोर्ट्स खरीदनी हो तो उसको $1 से तो नहीं मिलेगी ना, क्योंकि $1 से तो £2 की आएंगी। तो £4 की इंपोर्ट खरीदनी हो तो फिर ऑब्वियसली $2 दे, तो ऑब्वियसली प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स बेसिकली आपकी बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा, डिमांड फॉर इंपोर्ट्स गिर जाएगी, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स गिर जाएगी और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स गिर जाएंगे। तो बस दैट्स इट, यही आंसर है आपका। लेकिन इसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा शुरू में कि जब करेंसी जो है वो आपकी डेप्रिशिएट होती है और मतलब या डी वैल्यू हो जाती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये बता देना कि हाँ, जैसे ये बता देना, जैसे मैंने ये लिखा कि यार यूके को सिर्फ इतने पाउंड्स पे करने पड़ेंगे टू बाय $1 वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स, एंड देन ये वाली यूएसए वाली बात, तो ये जरा समझा देना शुरू है, बस यही आपका आंसर है, एंड दैट सिंपल। ठीक है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पार्ट डी अच्छा सवाल है, कह रहे हैं डिस्कस वेदर और नॉट एन इकोनॉमी विल बेनिफिट फ्रॉम एन इंक्रीज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आपको पता है सी कंपोनेंट है एडी का, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर आपका सी बढ़ जाएगा तो सी बढ़ने से क्या, तो आपको पता है सी बढ़ने से एडी बढ़ता है, तो वो कह रहे हैं कि इसके बेनिफिट बताए। क्या क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये तो फुल मार्क्स ले आओगे आप उसमें, अगर आपके मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो क्या इकोनॉमी को बेनिफिट होगा अगर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ जाए? इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ रहे हैं अगर एडी बढ़ता है तो क्या इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। इसमें तो आप घुस के मतलब घुस जाना बिल्कुल इस आंसर के अंदर, ये तो बहुत कुछ लिखने को है इसमें। तो अब बताएगा कि देखें कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या होता है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज कंज्यूमर स्पेंडिंग दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इससे क्या होगा, डेफिनेटली जब कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी इट विल रिजल्ट इनटू अ पॉजिटिव डिमांड शॉक। एडीएस का डायग्राम बनाना, एडी को राइट पर शिफ्ट करना, बोलना कि देखो प्राइस लेवल आपका बढ़ जाएगा, बट इस पे फोकस नहीं करना कि प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, ओ माय गॉड इन्फ्लेशन आ गई एंड दैट थिंग्स आर बैड। नो, इधर यू अज्यूम दैट इन्फ्लेशन इज विद इन कंट्रोल, राइट। तो पॉजिटिव डिमांड शॉक की बात करना, ठीक है। एंड देन टेल के इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी? एक्चुअल ग्रोथ आएगी। वी नो जब एडी बढ़ती है तो एक्चुअल ग्रोथ आती है, नॉट पोटेंशियल ग्रोथ। फिर आप एक और डायग्राम बना सकते हो कि यार दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड अनयूज्ड रिसोर्सेज यूज होंगे, so you'll move towards the PPC curve or you'll move towards full employment, right? Full employment of output. And again, this will also result into, obviously से क्या होगा, it will result into cyclical unemployment will fall. क्या होगी? Cyclical unemployment will fall. अगर past में कोई recessions थे या recessionary impacts थे, they will reduce, economy will grow, economy will recover from, if there was any past recession or a past slowdown, economy will recover and it will get a boost. Stimulus मिलेगा economy को, boost मिलेगा economy को, employment levels बढ़ेंगे, economic growth बढ़ेगी, टैक्स रेवेन्यूज गवर्नमेंट के बढ़ेंगे, विच दे कैन ऑब्वियसली, क्योंकि फर्म्स का आउटपुट बढ़ेगा तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे, बिकॉज नेशनल इनकम बढ़ी होगी तो टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम इनकम टैक्स बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम corporate tax बढ़ेगा, which the government can spend on back on essential services like education, healthcare, infrastructure, and you know, so even though you could say that even though AD is rising, you know, inflation is, although price levels would go up, but then again that maybe, you know, they are within the limits, they are within targets, so it's not a problem. It will result into more stability in the economy. Why more stability? Because there is more stimulus, right? Recessions तो अच्छे नहीं होते ना, definitely a recessionary impact तो अच्छे नहीं होते। तो consumer spending is a sign of growth, it's a sign of economic growth, right? And economic growth is good, right? Because it would encourage multinationals, MNCs and more FDI to come in the economy. That would have a further impact on your GDP and tax revenues, and obviously would also encourage foreign exchange as well. लेकिन disadvantage में तुम लिख सकते हो, however, it does not always results into impact. तो positive होता है, but you know, it's not, because whether the impact will be positive or negative depends upon, you know,
how bad or good the inflation is. So what if a rise in consumer spending results into a high inflation in the economy? So what if the inflationary pressures are very high? So if there are high inflationary pressures, right, high inflationary pressures, then it may offset the positive impacts of a rise in consumer spending, because consumer spending may just simply result into more and more price level, and then there would be inflation in the economy. And what if the rate is very high? So that would be harming and harmful for the country, because it would just create more and more panic and uncertainty, and it would redistribute your incomes from poor to the rich, जो हमने बात की, ठीक है. एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग वैसे भी बढ़ ही होती है. तो देखें ना, बात वही है, अगर इन्फ्लेशन विद इन टारगेट से तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन आपकी बढ़ती चली जा रही है तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही होती है. तो द फैक्ट कि हाँ यार कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, देयर इज सो मच इन्फ्लेशन. एंड प्लस वो इन्फ्लेशन जो है वो खास तौर पे पुअर को तो बहुत बॉदर कर रही होती है, लो इनकम ग्रुप्स को. तो दे आर द वंस हु आर सफरिंग. स्पेंडिंग कर रहे होंगे रिच लोग, सफर कर रहे हैं पुअर लोग. सही है ना. ऑल्सो एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब कंज्यूमर स्पेंडिंग आपकी बढ़ रही है ना, तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ती है, और जब नेशनल इनकम बढ़ती है, so there is also the risk that people in future may start importing more, right? So this then again might not have a positive impact on the economy. In fact, it may reduce your aggregate demand in future. If consumer spending rises and national income rises in future, and then in future if imports start rising, this will have a negative impact. And you know, plus अगर आप बोलते हो यार इन्फ्लेशन आ रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने से आप कहते हो इन्फ्लेशन आ रही है, सो आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो अनकम्पेटिटिव हो जाएंगी, और एक्सपोर्ट्स जब अनकम्पेटिटिव हो जाएंगी, सो इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड योर करंट अकाउंट डेफिसिट्स. अगर डेफिसिट्स थे तो वो वर्सन हो जाएंगे, और अगर सरप्लसेस थे वो रिड्यूस हो जाएंगे. ठीक है. ऑल्सो रिमेंबर के देखें, बात ये है कि अगर इकोनॉमी में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, लेट्स सपोज, ठीक है ना, लेकिन अगर खाली कंज्यूमर स्पेंडिंग इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिटरमाइंस एग्रीगेट डिमांड. व्हाट इफ इन्वेस्टमेंट्स आर फॉलिंग? What if government spending is falling? What if exports are falling, right? So in that case, a rise in consumer spending might, if that is offset by a fall in investments or a fall in government spending, then AD will not rise. Maybe AD will not rise to an extent that you were expecting, and the economy will not see a lot of benefits that you were expecting, right? So मतलब, और प्लस अगर आपको याद हो आपने ये पीपीसी पढ़ा होगा, यहाँ पे कैपिटल गुड्स हैं, यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स हैं. अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो ज्यादा स्पेंडिंग जो है वो अपनी कैपिटल गुड्स से कंजम्पशन गुड्स पे लेके जा रही है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इट्स नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड टू इन्वेस्ट मोर इन, you need to also invest in capital goods. तो अगर आपकी consumption increase हो रही है, so you're diverting your resources away from capital goods, right? You're spending more on consumer goods, so it's not good for the long term growth of the economy, because investment in capital goods is very important, like because your machinery will ultimately deplete. Then how will you produce consumer goods in future? Also remember that we really don't know, if you're saying that consumer spending is going up, so consumer spending on what kind of goods is going up? Whether on merit goods it's going up, then it's very good. अगर merit goods पे consumption बढ़ी, बहुत अच्छी. अगर wants पे बढ़ी और luxuries पे बढ़ी है, so obviously poor people will not be able to do that, right? Poor people तो अपने necessities पे spending करेंगे, और अगर अमीर लोग luxuries पे कर रहे हैं, तो again वो disparity between the rich and the poor बढ़ेगी. ठीक है. और अगर आपकी स्पेंडिंग जो है इकोनॉमी में वो डीमेरिट गुड्स पे हो रही है ज्यादा, तो फिर तो वेलफेयर के अगेंस्ट है, फिर तो लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़ेंगे. हाँ, जीडीपी बढ़ेगी, because obviously if you're consuming more on demerit goods, GDP will go up, but then it won't really improve the welfare. ठीक है. So there are a lot of points that you could actually mention regarding this answer, and then you could conclude your answer by saying that whether the economy really benefits from an increase in consumer expenditure depends upon whether the rise in consumer spending does not brings a lot of inflation in the economy, because if it does, then it may have a negative impact on your current account, and whether the rise in consumer spending is not on maybe demerit goods or harmful goods and stuff like that. So this is how you could end your answer. And yes, so simple sa question tha, simple answer, simple question, simple paper, inshallah. So I think we're done with this question. Okay, so we are done. I'll see you all in the next class. Until then, take care.